बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है। अब भारत की शिरकत हुई एससीओ के समिट के अंदर पाकिस्तान में, और इसको खुशाइन देखा गया पाकिस्तान के अंदर। और जो भारतीय जर्नलिस्ट आए उन्होंने भी ये फरमाया कि जो जयशंकर साहब का तशरीफ़ लाना था पाकिस्तान, वो कोई कम बात नहीं थी। और उसके बाद जो टेबल शेयर की गई इसहाक डार साहब, जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ। और फिर कहा गया कि फातमीद साहब के साथ भी कोई गपशप उनकी रही, और जाते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मुलाकातें रहीं। गालिबन भारत की के साथ क्रिकेट टीम के मैच के हवाले से भी बातें हुई। तो ये खुशाइन एक खबर थी। और फिर ये भी कहा गया कि भारत किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप ब्रिक्स के हवाले से। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान में जो हालात में बिगाड़ आपको नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह कश्मीर है। और कश्मीर का मसला अभी तक पेंडिंग है। न वो बायलैटरल लेवल पे हल हुआ है, और न मल्टीलैटरल फोरम यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेज़ोल्यूशंस हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। और इसी हवाले से पाकिस्तान में और कश्मीर में, बल्कि दोनों साइड्स ऑफ कश्मीर में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं। उसमें से एक 27 अक्टूबर है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुबीन शाह साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं, टर्की बेस्ड बिजनेसमैन हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्रीनगर के प्रेसिडेंट भी रहे। फिर आपने कश्मीर की तहरीक के हवाले से भारतीय जेलों का सामना भी किया, और इस वक्त आप तुर्की में बैठकर कश्मीरी मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। पहले तो डॉक्टर मुबीन शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये 27 अक्टूबर हर साल हम मनाते क्यों हैं? इसकी अहमियत क्या है और उसकी अफादियत क्या है? October 27th is the date on which Indian forces landed in Kashmir, and this is the time when through a purportedly एक जो उन्होंने किया था with the Maharaja of Kashmir, an accession document which is not original, is nowhere to be found. Original is nowhere to be found, and on that basis they sent that army. And 27th October that is why a lot of people in Kashmir as well as Kashmiris all over the world consider it as a black day. They celebrate it as a black day of Kashmir. But at the same time, आज मेरे को एक फ्रेंड ने, नज़ीर साहब गिलानी, आई थिंक यू मस्ट नो हिम, पीपल in Kashmir know him, and he wrote to me that we should take some positives out of this also. Positives in the sense that this day should remind us of also commitment from India, that they had done some commitments on this day based on this sending their army. The then Governor General Lord Mountbatten had signed this accession document and accepted the accession document on certain conditions. And those are, out of those conditions, one of the most important conditions was the asking the people of Kashmir what they want, and that is the right of self-determination. So we should remind the people of India that this day also not only signifies a black day for the landing of the army as an occupation force, but at the same time also a commitment day on behalf of the Indians, that they should keep the commitment of the first Governor General as well as the Government of India for that matter, because Governor General was not in person signing it, he was signing it on behalf of the government of India. So on that basis the army was sent, and army was accepted by the Maharaja at that time, and as such. So ये बात important है। वो आज तक हमने ये प्रोजेक्ट नहीं किया है, ये प्रोजेक्ट उस लिहाज से नहीं किया है जिस लिहाज से करना चाहिए, कि अक्टूबर 27 ये डेट सिर्फ उनकी लैंडिंग का नहीं है और उनका कमिटमेंट का भी डे है. So I think we need to change this narrative that the responsibility and is on India more, because they are occupying us. And for that matter, it's not question of that both the countries, India and Pakistan, has to give that right of self-determination to whole of Kashmir.
We should not limit it to only the Indian occupied Kashmir, but with Pakistan administered Kashmir also. So all Kashmiris should be given that right of self-determination what they want to, that should be the essence and our narrative for this day. This is my belief, and this is what we need to correct it and tell the people that this is the day, this is how it happened. And because of that landing of the Indian Army there on 27th October, within 2 months we had a massacre of Jammu, which जहाँ 4 lakh to 5 lakh लोग कत्ल किए गए, in Jammu. It's a big blot, before that, and it had started already. The Maharaja's forces were killing Muslims in the part of, particularly in the part of Kashmir which is now administered by Pakistan. तो फिर लेकिन जम्मू प्रॉपर में उन्होंने completely फिर killings happened after October 27th, and वहाँ Muslims became a minority. You see, Muslims became a minority in Jammu. And today, अभी elections देखे हैं कश्मीर में, तो वो जो जम्मू बेल्ट है, जम्मू बेल्ट का प्लेन एरिया जो है, which is dominated by Hindus, वहाँ आपने देखा BJP has won those seats. It is because of that basic जो उन्होंने उस वक्त population में change किया of our Muslim Hindu percentage, and that is why if you see the other areas like the mountainous areas, वहाँ BJP could not win because less population. तो ये सब उसी का, this is all happening. It happened. Today's history also reflects what had happened previously. क्यों हुआ, कैसे नहीं हुआ, and it's all reflected today also even in these elections which have just finished. अच्छा मुबीन शाह साहब, ये बताइएगा, बड़े एक नॉन कश्मीरी लीडर इंजीनियर नसीर, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा, उभर के सामने आए, इंजीनियर रशीद साहब जी, और उन्हें भारतीय मीडिया ने बड़ी कवरेज दी है, और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर मोदी साहब ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर जो है उसमें रायआमा होना चाहिए, तो आप रायआमा से क्यों डरते हैं? और फिर उन्होंने अपनी मिसाल भी दी कि उन्होंने मोदी साहब को हराया तकरीबन 2-2.5 लाख वोटों की मार्जिन से, तो वो उभर के सामने आ रहे हैं, जो उनका नैरेटिव है उसको इंडिया बाय भी कर रहा है, इंडियन मीडिया बाय करते हुए नजर आता है, उसे आप कैसे देखते हैं? सर देखिए क्या है कि ड्यूरिंग द पार्लियामेंट इलेक्शंस उन्होंने इलेक्शन जीता अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला, नॉट विद मोदी, अगेंस्ट उमर अब्दुल्ला sir. Yeah, but he was supported by the Modi party. That is said. It is said, purported to be said that because of that he was released from prison afterwards. मतलब उस वक्त लोग बोलते हैं कि he got votes because he was imprisoned. He was imprisoned before August 2019 on a charges of money laundering and all that, which has not been proved up to now. But the thing, he is still in jail and he is now on bail, and he won that election because of that thing. उसमें उसको वोट आ गए, और at the same time he was telling about settlement of Kashmir, जैसे आपने कहा कि मतलब ये, तो लोग जो है ना, जो आज आप देखेंगे फिर क्या हुआ, how the things turned out was that during the assembly elections, the Kashmiris voted very intelligently because they understood that Mr. Engineer Rashid and other people are being propped by these government to divide the votes in Kashmir, so that the majority is not got by any party. So, but at this point of time, except for National Conference, the Kashmiris felt there is no other party which can sustain or which can fight this system. So they gave to National Conference rather than to PDP, because PDP they had already tried last time. उन्होंने फिर BJP के साथ किया गठजोड़,
Sajad Lone he's on record to say that Modi ji is my elder brother. तो उन्होंने कश्मीरियों ने फिर they used their vote intelligently and then voted for national conference. So as told by in one of the articles by our previous finance minister in PDP rule and a very important person who did that BJP PDP joint thing, Mr. जो हमारे वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर होते थे मिस्टर द्राबू, उन्होंने बोला कि आज लोगों ने पहले भी आर्टिकल लिखा था कि कश्मीरीज विल यूज्ड not stone pelting, they will use vote pelting. They will use vote pelting to tell the Indian government what they think about it. So this vote is not for NC, it is vote against India. It is vote against Modi's policies in Kashmir. So that is why they wanted to prove, and that is what it is. Engineer Rashid, I don't know, how because I know him personally. I have met him a number of times. He was a person who was opposite to what was happening in Kashmir and all that. But that people can be manipulated, people can be used in such things, and he must have been जो analysts हैं, जो भी लोग who are keeping a close watch in Kashmir, were feeling that he was being propped up to divide the votes so that BJP comes into power. Because BJP will then take these independents and buy them out and make a government with a Hindu chief minister or something like this. This was their plan. So this is what Kashmiris said, we will vote completely for national conference, but at the same time give a message to the Indian government and the Indian people that we are not with this. Now, अभी आप देखिए ना कि the government is in place, so they have asked for that the state should be given statehood, and at the same time, people are clamoring that they should ask for 370 back. It should be a resolution from the assembly. Whether that will be approved by the government of India or not, that is beside the point. But this is what it is, because people want to tell the India that what you did on August 5th, 2019 was illegal. It was not with the people's concurrence. So this is all what is actually Kashmiri. Kashmiris want that they should be asked what we do. So this is basically October 27th. We should reiterate that also, that this was the basic commitment of the Indian government at that point of time, and today it still stands, and which was then further sanctioned by the United Nations Security Council, that the right of self-determination should be given, and that is, there is no other. अगर आप वो accession का जो उन्होंने वो जो बोलते हैं डॉक्यूमेंट है, वो देखेंगे, वो आज तक तो the original one has not come into public eye. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वोट देना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो माजी में अलाइनमेंट बिल्कुल वाज़ेह है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ रही, और इसी बेस के ऊपर आपने देखा कि माजी में लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। मुझे याद पड़ता है नासिर जमाल बड़े पॉपुलर थे इजिप्ट के, और उस वक्त सवाए चंद लोगों के जो समझते थे कि नासिर जमाल जो हैं वो अमेरिकन पे रोल के ऊपर हैं, लोग नहीं समझते थे, और उनके जनाजे पे लाखों लोगों ने शिरकत की, और बाद में जब CIA के डॉक्यूमेंट सामने आए तो पता चला कि वो CIA के पे रोल पे थे, और इसी हवाले से लोग कहते थे कि सैयद कुतुब का वो उन्होंने मरवाया, उनकी फैमिली को उन्होंने इम्प्रिजन करवाया। तो कहीं ये तो नहीं है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ गई है और बाद में पता चले 370 का नारा लगाते लगाते जो असल मुद्दा है कश्मीर का, उससे लोगों को हटा के ले जाए? देखिए, ये we know that Kashmiris know that they are not dependable, but in the whole lot of the election thing, they consider that this is the only party which has some history, which at least will keep their commitments to a certain extent, but they know that they can be ditched.
वो तो नहीं है कि Kashmiris don't know that. But at the same time, the message going outside, the message going to India was that what you did on August 5th, 2019 is not acceptable, number one. Number two is this thing that the sentiment of right of self-determination in a way is there completely with Kashmiris, that they do not want to be a part of India. ये तो नहीं है कि मतलब election में vote किया तो that is not. You see, election even in the UN Security Council resolution जो है, जब 1950, if I am not mistaken, 1956 में the Kashmir they made a Kashmir constitutional this thing. तो उस वक्त वो गए यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया गया कि हमने तो अब किया है, पीपल दे सेड दिस विल नॉट डू, यू आर, दिस इज वोटिंग फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल दिस थिंग. तो ये यूएन इज ऑलरेडी अप्राइज्ड, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी अप्राइज्ड अबाउट सच गेम्स ऑफ इंडिया. बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे, अभी देखें ना कि आप देखेंगे टाइम विल कम, इस वक्त तो देखे ना, बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने आज पोस्ट किया फेसबुक पे, 900,000 आर्मी है टू स्टिफल द पीपल ऑफ कश्मीर. लोगों को जेलों में अभी भी है, जो 2019 में जेलों में गए हैं, अभी भी वो जेलों में हैं. some have not been even given bail, and thousands of students, thousands of youth are in jail because of that. And leaders तो सब जो हुज्जत के सब leaders हैं, they are all in jail, the main leaders, except for some few leaders, they are outside, like Maulvi Farooq Sahab. That is he is the only known face who was house arrested, but he is now he can go around, but also his movements are very controlled. तो ये बात है कि ये तो वो नहीं है कि मतलब जी आप सेटल हो गया, सब कुछ हो गया. ये हाँ, ये आपका जो कहना है बहुत दुरुस्त है. We Kashmiris know that National Conference is capable of doing something like that. They have ditched us all the time. It has happened in 1975. First तो 47 में ही उन्होंने गलती की. उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने that he supported the Maharaja when he wanted to be with India. Then in 53 when he was removed, after that he started a plebiscite front. फिर 75 में उन्होंने फिर top sitter भी किया. This is told by I know some of the Sheikh family people have told me personally also, and I am telling you it is a fact also, it may be a fact also, that in 1971 after the Bangladesh became created, and Farooq Abdullah was specifically sent by his father to Pakistan, and it is on record that he went to Pakistan after 71, and there it is told by the NC cadres to us, and even the topmost person in the Sheikh family, that Bhutto Sahab advised Farooq Abdullah to tell his father to take whatever is given by India. We cannot do anything for him. Pakistan is not in a position to do. This is what I have information from the highest quarters in the Sheikh family. So, it is something like this. आज नहीं, हम आज वही सिचुएशन हम देख रहे हैं. मतलब सिचुएशन क्या है कि मतलब जब 2019 में हुआ, आपके बाजवा साहब ने बोला कि 20 साल के लिए तो कश्मीर का प्रॉब्लम करो जी कोल्ड स्टोरेज में. इनको सीज फायर दे दिया जब दूसरे साइड में चाइना था. तो ये तो हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री को कोई नहीं चेंज कर सकता है. और जब when even I went to Pakistan, I was told by very important quarters that the army had told that we don't have diesel, we don't have this thing, we cannot fight it. तो ये तो बातें हैं ना, ये तो सच है ना, ये तो हुआ है. यही 71 में हुआ. 71 के बाद शेख अब्दुल्ला ने ये किया. वो शेख अब्दुल्ला को I have met him. Sheikh Abdullah I have met personally also 4-5 times, not many times. And once I had a discussion about it, because although I was very young at that time, I had come back from Pakistan on my first visit to Pakistan. I went back and I met him, and we discussed about some developments in Pakistan, about industry and everything. And he was forced to say that I made a mistake, but I had no other choice.
I had no other choice. The Sheikh Abdullah told me, a young man of, I was at that time, I think 24, 25, and I had joined business, and he told me, yes, but I had no choice. And that is why I corroborate that statement of one of the family members telling me that Bhutto Saab told us, take whatever Indira Gandhi offers you and forget Pakistan. We are not in a position to do anything for Pakistan, for Kashmir. So ये बातें हैं, ये circumstances होते हैं, ये होता है, क्या नहीं होता है. I am not defending anybody, but I am saying this is the facts. So we Kashmiris know National Conference is saying. National Conference can, but they are the party at this point of time. They were the only, you can say, parties which were in elections, which, for example, Jamaat Islami also came in the elections. They are the people who were telling all the time that elections में करना ही नहीं है. This is against our religion, against our this. But they stood as independents in this elections. तो लेकिन कश्मीरियों ने समझ लिया कि अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो यहाँ इंडिपेंडेंट आएंगे. इंडिपेंडेंट्स, उनको पार्टी वार्टी कुछ नहीं है. मोदी जी करेंगे उनके साथ गठजोड़, पैसा करेंगे. तो आपको पता ही है पाकिस्तान, which other country doesn't know what happens then, particularly these independents and all that. उनको पैसा देंगे, वैसा करेंगे. वो तो इंडिया में भी होता है. Different in Maharashtra, the present state government which is ruling Maharashtra government has been created on that basis only. उनका जो एनसीपी का जो चीफ था उसको केस किया उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूशन ने केस कर दिया, उसने चेंज कर दिया. उससे गवर्नमेंट ही चेंज हो गई within 2 months of taking over in state government. So ये चीजें इंडिया पाकिस्तान में होती रहती हैं और यही होता है. तो वो मोदी जी ने किया था प्लान, उन्होंने किया था, और वो इंजीनियर रशीद वाज इन दैट कंटेक्स्ट कि वो इंडिपेंडेंस जीतेंगे 8-10 सीटें. कैसे हुआ? 29 सीट्स बीजेपी वन इन जम्मू. If they would have got 10-15 seats of the independents, they would have formed the government. We would have had a Hindu chief minister, and whatever it is, क्या होता क्या नहीं होता फिर बाद में वो दूसरी बात है. बट दिस इज व्हाट इट इज. तो ये उसमें प्लान में रुका. ये दिस इज हैपेंड, एंड आई डोंट थिंक नेशनल कॉन्फ्रेंस कैन डू इट सो ब्लैटेंटली एज दे हैड डन बिफोर, बिकॉज नाउ इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर थिंग्स. अभी उन्होंने बात ही नहीं की सपोज कि हम ये 370 नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मतलब ना कैबिनेट में नहीं करेंगे अप्रूव. तो शोर इतना उठा कि दे वर फोर्स्ड टू से दैट नहीं जी वो असेंबली में हम रेजोल्यूशन करेंगे. फिर लाते हैं नहीं लाते हैं वो दूसरी बात है. बट दिस इज द प्रेशर, पीपल आर वाचिंग देम. एवरी स्टेप ऑफ देयर इज बीइंग वॉच्ड कि वो क्या करेंगे कैसे नहीं करेंगे. एंड दोज पीपल, अब इंजीनियर रशीद भी है जो उसकी पार्टी में एक मेंबर है वहाँ, और जनाब सजाद लोन है, उन्होंने भी फाइट उसी पे किया इलेक्शन. आप ये दिस इज द आयरनी. उन्होंने भी फाइट किया कि 370 को वापस लाने का, उन्होंने भी फाइट किया उसी पे. बट कश्मीरियों ने सोचा कि वो तो इतना मेजॉरिटी में नहीं आ सकते हैं, ये आ सकते हैं, एंड वी डोंट डिवाइड अवर वोट्स. सो ये मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ so that people in Pakistan or people whoever you view your program understands कि what actually क्या है, इस सब में क्या मसला है. डॉक्टर साहब, 2 सवालात करूंगा. एक सवाल तो ये कि जो बड़ी अच्छी किताब है, मैंने कई दफा इसका हवाला दिया है, एंटोनी लोवेंस्टीन, इन्होंने किताब लिखी पैलेस्टाइन द लेबोरेटरी, और इसका पूरा टाइटल है हाउ इजराइल एक्सपोर्ट्स द टेक्नोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन अराउंड द वर्ल्ड. इसके अंदर ये बताता है कि भारत सबसे बड़ा परचेजर है, बायर है इजरायली सर्वेलेंस और हथियारों का, और साथ में जो मेथड ऑफ ऑक्यूपेशन है. अब इजराइल की जो हालत है इस वक्त, गजा के साथ लड़ते हुए है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए, जिसका मुख्तसरन मैं ये बताऊं कि 1 इंच साउथ लबनान में वो कैप्चर नहीं कर पाए हैं. हैवी कैजुअलिटीज वहां पे बियर कर रहे हैं, और उनके पास मरकाबा टैंक्स को 400 के करीब हैं
जिसमें से कहा जा रहा है कि 37, 38 या 40 के करीब हिजबुल्लाह ने उनके तबाह कर दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो ऑक्यूपेशन की जो स्ट्रैटेजी थी कि इतनी क्लिनजिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके वहां पे हम कॉलोनाइज कर लेंगे, अपनी सेटलमेंट्स बना लेंगे, वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ गजा में फलस्तीनी वापस आ गए। तो आपको लगता है कि जो इसराइल की इस वक्त इकोनॉमिक, इंटरनल, पॉलिटिकल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो इमेज है, जो टार्निश हुआ है बुरी तरह से, क्या भारत इससे सबक सीखते हुए कोई नरम अपना लहजा या अपना बर्ताव रखेगा कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरियों के पास क्या ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि भारत के साथ नेगोशिएट करें कि भाई आपने देख लिया जिसकी स्ट्रेटेजी पे आप चल रहे हैं वो नाकाम नजर आ रही है दुनिया में भी और खित्ते में भी, और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन जिसने क्रिएट कर दी है। देखिए सर, ये जो आपका कहना है, इट इज yes, it is what is we are seeing in Gaza and all people, because when जो Palestinians है, they have shown the world that they are going to resist whatever it comes to. They will not, migrate from there. I was just today also talking in the morning कि इन्होंने इतना इतना मतलब डिस्ट्रक्शन देखकर भी they are resisting. They went back to North Gaza and then again now they are attacking again North, क्योंकि वहाँ जी वो हमस के आप बंदे हैं और वो बंदे हैं, that is why we want to do it again. लेकिन सवाल ये है, इंडिया is still having this, इसी जैसे इजराइल को है। इजराइल तो ये नहीं कर सकता था जब तक उसको सपोर्ट नहीं होती अमेरिका की। इंडिया इज स्टिल हैविंग अ सपोर्ट। अभी थोड़ा चेंज हो रहा है अमेरिका में, हो रहा है, not because of Biden change या Trump आएगा, we don't know what is their policy going to be, but India has to realize that there is only a certain limit to which they go, and that they have been proved today. In Kashmir also it has been proved by these elections and all, जो भी इन्होंने वो mechanisms किए, वो किए, ये किए, they were not successful in that. अभी तक वो उन्होंने तो नहीं किया जितना इजराइल ने डिस्ट्रक्शन किया गाजा में, लेकिन मतलब दे वर ट्राइंग टू वेट। मैं तो सिर्फ पहले भी बोला हूँ कि हमको देखना है कि व्हाट दिस प्रेजेंट जो गवर्नमेंट नई आई है, स्टेट गवर्नमेंट, वेदर दे विल स्टॉप द ऑनस्लॉट ऑफ इंडिया। ऑनस्लॉट इन द सेंस कि अगर वो 370 का वो वापस ला सकते हैं। इवन आई वेंट टू दिस एक्सटेंट टू टेल सम ऑफ देम कि अगर आप 35A को भी लाएंगे ना इन अ डिफरेंट फॉर्म, जैसे डिफरेंट स्टेट्स में है इंडिया में, दैट नो आउटसाइडर कैन टेक प्रॉपर्टी, तो दैट विल स्टॉप दैट ऑनस्लॉट। 370 getting back 370 will not. The application of 35A in a different form, just like in Himachal Pradesh is there or Northeast is there, तो वो onslaught अगर वो रुकवा सकते हैं तो then I can feel that India has learnt a lesson in what you have been depicting. नहीं तो then or else I feel they are going to continue. Previously it might have taken, let us say, 3 years. It will take 5 years, 6 years, 7 years. इजराइल ने भी तो बहुत टाइम लगाया ना इस चीज पे पहुंचने के लिए। इंडिया को भी उतना ही, मतलब they will take more time. Previously ये मेरे को तो ख्याल था, मेरे को थिंकिंग थी कि अभी जो ये क्या नाम है अपना ट्रेन आ जाएगी this year, and then people can flood into Kashmir and take residency and take this thing and change the whole percentage of population mix. तो वो अब हो सकता है कि that will stop, and if constitutionally they do something like this, a replacement, then only I can say yes, that plan is now stopped, and then we can talk about other things. हाँ, आपकी बात ये है, we are Kashmiris, as Kashmiris, even recently Moli Farooq has also told, he is also a Hujjat leader, उन्होंने भी बोला, मैंने भी आपको पहले भी अपने blogs में आपके साथ कि we are not against negotiations, but negotiations have to be with certain points, with certain conditions.
because or else there will be only negotiation. Nothing will happen. Nothing will come out of it. This is my point. डॉक्टर साहब, मुख्तसरन बिकॉज़ टाइम बिल्कुल खत्म होने लगा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए मुख्तसर अंदाज से एक दो जुमलों में? सर मैं तो आपको पहले से ही बता रहा हूँ, पाकिस्तान yes, but without conditions any negotiations is futile. It will not help. The problem will still stay there. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुबीन शाह साहब। आपने डॉक्टर मुबीन शाह साहब की गुफ्तगू सुनी। मेरा ख्याल ये है कि इसका लुब-ए-लुबाब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में तो आ गई है, लेकिन इट इज़ अ बिग टेस्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो उन्होंने इलेक्शंस में वादे किए हैं, अगर वो पूरा कर लेते हैं तो उनकी ये बड़ी अचीवमेंट, बड़ी विक्ट्री होगी और नेक्स्ट टाइम भी हुकूमत बना पाएंगे। अदरवाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस का वही इमेज दुनिया में और स्पेशली कश्मीरियों में बढ़ेगा, फैलेगा, जो कि माजी में उनके हवाले से है। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।